नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएनएस नर्सिंग एकेडमी में, जहाँ पर अपन देखेंगे एन नर्स नॉरसेट के अंदर जो तमाम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से यहीं से देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के अपन पहले क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, a nurse is inserting an nasogastric tube in the adult male client. During the procedure, the client begins to cough and has difficulty breathing. Which of the following appropriate nursing action? Option A is quick insert the tube, and option B notify the physician immediately, and C remove the tube and reinsert when the respiratory distress subsides, and D pull back on the tube and wait until the respiratory distress subsides। चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें और राइट आंसर पुट करें। Right answer is D. Pull back on the tube and wait until the respiratory distress subsides. Next, the nurse Ryan is assessing for correct placement of nasogastric tube. The nurse aspirate the stomach content and check the content of pH. The nurse verify correct tube placement if which pH value is noted. नर्स नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करने के दौरान करेक्ट प्लेसमेंट का पता करने के लिए पीएच को वैल्यू को नोट कर रही है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। 3.5। नेक्स्ट, the nurse is preparing to remove a nasogastric tube for a female client. The nurse should instruct the client to do which of the following just before the nurse removing the tube. नर्स पेशेंट के नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को रिमूव कर रही है, उस दौरान पेशेंट को नर्स क्या इंस्ट्रक्शन देगी? ऑप्शन ए इज एक्सेल, ऑप्शन बी इनहेल एंड एक्सेल क्विकली, एंड सी take and hold a deep breath, and option D perform a well shallow maneuver. Right answer is C. Right answer is C. Take and hold a deep breath. Next, the nurse Joy is preparing to administer medication through a nasogastric tube that is connected to the suction. To administer the medicine, the nurse would, option A is position the client supine to assist a medication absorption. Option B, aspirate the nasogastric tube after medication administration to maintain patency. Option C is clamp the nasogastric tube for 30 minutes following administration of medication. And option D is change the suction setting to low intermediate suction for 30 minutes after medication administration. Right answer is C. Clamp the nasogastric tube for 30 minutes following administration of the medication. Next, a nurse is preparing to care for a female client with esophageal varices who just has a Sangston Blackmore tube inserted. The nurse gathers supplies. Now that which of the following item must be kept at the bedside at the time, all time? नर्स सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब इंसर्ट के दौरान कौन से बेड साइड कौन से आइटम को रखेगी? Option A is an obturator, B clay clamp, and C an irrigation set, and D a pair of scissors.
Option D is right. Next, Dr. Smith has determined that the client with hepatitis has infected contacted with the infection from contaminated food. The nurse understands that this client is most likely experiencing what type of hepatitis. फूड कंटामिनेटेड फूड के द्वारा कौन सा हेपेटाइटिस स्प्रेड होता है? ऑप्शन ए इज हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस डी. Right answer is A. Next, a client is suspected of having hepatitis. Which diagnostic test result will assist in confirming these diagnoses? हेपेटाइटिस को कंफर्म करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक किया जाता है? ऑप्शन ए इज एलिवेटेड हीमोग्लोबिन लेवल, ऑप्शन बी एलिवेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल, ऑप्शन सी एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, ऑप्शन डी इज द डिक्रीज erythrocyte sedimentation. Right. Right answer is B, elevated serum bilirubin level. Next, the nurse is receiving the physician order writing for a male client admitted to the hospital with acute pancreatitis, and which physician order should the nurse question if noted on the client chart? नर्स एक्यूट पैनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट के फिजिशियन के ऑर्डर दिए गए पर क्वेश्चन करेगी. एनपीओ स्टेटस, बी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट, एंड ऑप्शन सी मॉर्फिन सल्फेट फॉर पेन, एंड ऑप्शन डी इज द एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन. Right option is C, morphine sulfate for pain. Next, the nurse is performing an abdominal assessment and inspect the skin of the abdomen. The nurse perform which assessment technique next? एब्डोमिनल असेसमेंट के दौरान नर्स इंस्पेक्शन कर रही है, उसके बाद में कौन सा असेसमेंट परफॉर्म करेगी? palpate the abdomen for size, option A, and option B is palpate the liver at the right rib margin, and option C is the listen to bowel sound in all four quadrants, and option D is the percussion the right lower abdominal quadrant. Option C is listen to bowel sound in all four quadrants. Next, the nurse is caring for male client with a diagnosis of chronic gastritis. The nurse monitor client knowing that this client is a risk for which vitamin deficiency? क्रोनिक गैस्ट्राइटिस वाले पेशेंट के अंदर कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी, एंड ऑप्शन डी विटामिन ई. Right answer is B, vitamin B12. Next, the nurse is monitoring a female client with a diagnosis of peptic ulcer. Which assessment finding would most likely indicate perforation of the ulcer? Likely indicate perforation of the ulcer. Option A bradycardia, option B numbness in the leg, option C nausea vomiting, option D rigid broad like abdomen. Option D is right, a rigid broad like abdomen. Next, a nurse is providing discharge instruction to a male client following gastrectomy and instruct the client to take which measures to assist in preventing dumping syndrome?
डंपिंग सिंड्रोम के दौरान पेशेंट को कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है? ऑप्शन ए एम्बुलेट फॉलोइंग ए मील, ऑप्शन बी ईट हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, ऑप्शन सी लिमिट द फ्लूइड टेकन विद मील, ऑप्शन डी सिट इन हाई पावर पोजिशन ड्यूरिंग मील। Option C is right. Limit the fluid taken with meal. Next, the nurse is preparing a discharge teaching plan for a male client who had umbilical hernia repair. What should nurse include in the plan? Option A is irrigating the drain. Option B avoiding coughing. Option C maintaining bed rest. Option D restrict pain medication. Option B is right. Avoiding coughing. Next, the nurse is caring for hospitalized female client with a diagnosis of ulcerative colitis, which finding is noted on assessment of a client or the nurse report to physician. Option A hypotension, option B bloody diarrhea, option C rebound tenderness, option D hemoglobin level of 12 mg per dl. Option C is right. Rebound tenderness. Next, the nurse is caring for hospitalized female client with diagnosis of the ulcerative colitis, which finding is noted on assessment of client of the nurse report for physician. ये अपने पहले देख लिया है. C is right answer. नेक्स्ट, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।